Hello friends, Namaskar dosto, good afternoon. Today is 22nd of February 2024. मेरा नाम है Shanandu Das. I'm a global forex and commodity market trader, always looking for profitable opportunities across the market segment in multi-asset and across the globe. तो ये आज का जो डिस्कशन है, दिस वीडियो इज विल बी इन इंग्लिश, मिक्स ऑफ हिंदी और मिक्स ऑफ इंग्लिश टू रीच द ग्रेटर ऑडियंस। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोब में क्या अपॉर्चुनिटीज बन रहा है, जो जिसका हम लोग पार्ट लेंगे। दिस इज ऑलरेडी एन ऑनगोइंग वीडियो सीरीज जो मैं करता हूँ। वी आर ऑलरेडी इनटू सम पोजीशन, सो उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, हाउ इज इट गोइंग। सो लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल गो टू द डायरेक्टली टू द ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म टू डू योर चार्टिंग एनालिसिस। मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं अपना एनालिसिस के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे यूएस का बॉन्ड मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। और वो अपॉर्चुनिटीज के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज स्विंग इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड फंड्स। दिस इज बॉन्ड मार्केट ट्रेडिंग बोला जा सकता है, बट वी आर नॉट प्लेइंग द शॉर्ट साइड, वी कैन ओनली प्ले द लॉन्ग साइड। तो स्ट्रैटेजी इज रादर अ स्विंग इन्वेस्टमेंट इनटू बॉन्ड फंड्स। तो इसके लिए मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं एसडी रेनबो वेव का मदर सेटअप, विच इज फाउंटेन ऑफ गोल्ड। फाउंटेन ऑफ मदर गोल्ड सेटअप मैंने इस्तेमाल किया और आई हैव अनहाइड इट। और लॉन्ग टर्म मतलब we'll look at the 10-year and 30-year bonds and there मुझे जो दिख रहा है, these in bond interest rates are currently on a broadly bullish path। यहाँ पे हम लोग का एग्जिट मिला था। और अगर हम लोग वीकली चार्ट को देखेंगे, आई हैव डिस्कस्ड दिस, देयर इज अ बाय सिग्नल, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर overall bonds। In fact, if interest rates rise from here, this will be a bad news overall for equities as well। डॉलर के लिए अच्छा होगा यहाँ से इंटरेस्ट रेट को सिग्निफिकेंट राइज होना, और होना पॉसिबल है। ये सस्टेन कर रहा है चार्ट वाइज, दिस इज पॉसिबल। 4.37 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। So unless I see a significant breakdown of 4% level, I'll not prefer, or rather this level 4.31, and let it move to the downside। एक बार लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए, उस जगह पे मैं फिर से लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स, यानी जो आईएनडी मनी में टिकर है टीएलटी, 20 years treasury bond I shares, हम लोग as part of liberalized remittance scheme, we can invest in foreign exchange traded funds, selected fund, as from India we cannot do for go for inverse ETF। और ETF के जरिए इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ग्लोबली। तो इसमें जो टीएलटी है, टीएलटी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊंगा, आई कैन यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि टीएलटी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, बिकॉज ओवरऑल इंटरेस्ट रेट इज गोइंग अप। तो हमारा ये बॉन्ड फंड से स्विंग इन्वेस्टमेंट का एग्जिट आ चुका है। नाउ यू विल वेट once again till the interest rate turns on the negative side। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन बॉन्ड फंड। सो इंडिया में आवर गवर्नमेंट जनरली डू नॉट गो फॉर लॉन्गर देन 10 year बोरोइंग। रादर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर जो है फॉर लॉन्गर टेन्योर। सो यहाँ पे हम लोग का प्रेफरेंस रहेगा 10 year बॉन्ड फंड्स। और 10 year में हम लोग वीकली चार्ट फॉलो करेंगे रेनबो में। So clearly यहाँ पे दिख रहा है, this is interest rate is moving lower, very likely RBI will also cut rates। हम लोग बात किए थे कि interest rate can drop further towards about 7%, and that means further rise in our long term bond funds। तो उसमें अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड जो 10 year है, 10 year प्लस काफी सारे बॉन्ड फंड म्यूचुअल फंड में अवेलेबल होंगे। आप उस तरफ स्विंग इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। बट याद रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी का बात सुन के नहीं करना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर लुक एट द चार्ट, अंडरस्टैंडिंग ये जो चीज है इसको समझिए, और फिर जाके जो अपना ट्रेडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कीजिए। डोंट एटलीस्ट लिसन टू अदर्स, इवन टू मी, मेरा भी मत सुनिए, खुद थोड़ा बहुत सीखिए। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो उतना सीखने के बाद आई थिंक अगर आप ब्रॉडली ग्रीड
ग्रीडी ना होंगे, एक लॉजिकल रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, इट इज क्वाइट अचीवेबल। और मेरे वीडियोस आई थिंक विल बी हेल्पफुल इन वो आपका क्वेस्ट में। तो बॉन्ड में मेरा आउटलुक ये है, दीज आर द टू बॉन्ड फंड्स वी कैन बी लुकिंग फॉर। इसके साथ साथ अब हम लोग चले जाएंगे इंटरनेशनल इंडिसेस में। उसमें एक बार मेरा बनाया हुआ टेम्पलेट को देखेंगे, इंडेक्स इंटरनेशनल 1। This is, and once again, up move. US futures are rallying. Nvidia results are positive, and it's rising possibly for that. But overall market में जो देखने वाली बात है कि this is significantly in a flattish momentum zone. इसका मतलब एक outright bullish जो ये phase में था, this is not that phase. So index will be seesawing at moments. There will be sudden volatility down, volatile move down. So index, I think overall I will prefer to reduce some exposure from the index. The momentum is too flattish. ये कंसर्निंग है कि ओवरऑल जो अगर स्ट्रक्चर देखो, रसेल 2000 जो यूएस का मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का इंडिसेस मान सकते हैं, एंड while S&P 500 has been going up, Russell has not been going up. ये एक रेंज में मूव कर रहा है at the cyclical end of the cycle. This kind of behavior from Russell is very natural. Russell से इस ये behavior हम बहुत बार देखे हैं before major any events. So ये आउट मेन थीम इज, ये बेसिकली आउटराइट बुलिश फेज नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप जो स्टॉक्स कर रहे हैं उसमें आप राइट टाइमली एंट्री पे ध्यान दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट थिंक राइट डज नॉट मीन टाइटर स्टॉप लॉस। आपको लोअर क्वांटिटी से एक्सपोजर लेना पड़ेगा, लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना फंड को। इसके बाद बट ओवरऑल जो बुल रन है इट्स स्टिल इंटैक्ट, वी आर नॉट देयर येट, बियरिश की तरफ है नहीं अभी भी, वी हैव नॉट रीच दैट पॉइंट। बट मोमेंटम जो ये फेज में फ्रॉम नवंबर टू डिसंबर व्हाट वी सॉ द स्ट्रॉन्ग मूव, दैट काइंड ऑफ मोमेंटम मिसिंग है। यहाँ पे इनफैक्ट एक आरएसआई में एक बेसिक क्रॉसओवर भी नहीं है डाउ का, whereas we are having a green candle and challenging the all time high. This kind of market is very risky in the sense कि आपके psychology पर pressure डालने की, for entering stocks late, one correction you may be in big loss, you're squaring off, next day the market is going up, it will be a seesaw journey. So focus on your, definitely on the entry points. Two type of trades है दुनिया में, buy support, buy breakout, buy के side, sell breakdown, sell resistance when the trend is down. इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे एक बार विक्स का स्ट्रक्चर को एंड ओवरऑल क्या चल रहा है। यूएस मार्केट इज नॉट सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। विल्शायर 5000 which is broadest measure of stocks in US, it is bullish, दिख ही रहा है कि we are in a bullish cycle still, but probability of winning is much lower now, it's around 64%. So जैसा हम लोग बोले, it's not a full outright bullish market. Opportunities हम लोग को दिखा कि यूरोपियन सेक्टर्स में इटली, जर्मनी, स्पेन, निफ्टी 500 is also pretty strong today. इसको थोड़ा लास्ट वीक का फ्राइडे से कंपेयर करते हैं, ये नीचे का स्ट्रेंथ मीटर जो है लास्ट वीक का फ्राइडे के साथ कंपेयर करेंगे तो नैस्डैक इज वीक, S&P 500 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग और बाकी सब डाउन परफॉर्म कर रहे हैं, डाउ, नैस्डैक, रसेल। इटली इज सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मिंग, इटली इज स्ट्रॉन्ग। हम लोग चार्ट देखेंगे, सो यूरोपियन इक्विटीज वेर स्ट्रॉन्ग, हम लोग इसका बात किए थे। जो लोग बाहर है, यू कैन लुक फॉर यूरोपियन इक्विटी एक्सपोजर। लेट्स लुक एट द फुटसी चार्ट, फुटसी MIB और इटालियन इंडेक्स का चार्ट, इट इज बुलिश। जैसा हम लोग बोले थे, इट्स बुलिश कंटिन्यूएशन। और यूरोप में वीकनेस जहां दिख रहा था, दैट इज स्पेन, IBEX, and it is still weak. The daily chart is just a comeback. Weekly chart, the candle is still not bearish, means bullish enough. Sorry, candle अभी तक उतना bullish नहीं है,
बट दिस डेली में यहाँ पे आईबेक्स में भी एक कमबैक हो रहा है, तो एक रिन्यूड बाइंग आ रहा है यूरोप में। सो डेफिनेटली ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सिनारियो अभी भी बियरिश नहीं है, इट्स बुलिश। डिस्पाइट हम लोग एक लेट पार्ट ऑफ द साइकिल में है, अभी भी दैट एक ग्लोबल बेयरिश पिक्चर नजर में नहीं आ रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ कमबैक स्टोरी इन स्पेन। तो स्पेनिश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है आईबेक्स, जो लोग बाहर के बिफोर आउटसाइड इंडिया, आप देख सकते हैं फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इनटू आईबेक्स। आप चाहेंगे आईबेक्स 10,050 के ऊपर सस्टेन करे, विल बी लुकिंग एट न्यू रिकॉर्ड हाइज। कैक 40 जो फ्रांस का इंडेक्स है काफी स्ट्रॉन्ग रहा है एंड इज बीन मेकिंग न्यू रिकॉर्ड हाई, सो ब्यूटीफुल मूविंग हायर एंड दिस इज बुलिश। इसके बाद हम लोग देखेंगे जर्मन इंडेक्स, वंस अगेन अनदर ब्यूटीफुल कमबैक चांस, जस्ट लाइक ब्रेकआउट, लुक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मोमेंटम साथ में। सो यूरोपियन जो स्टॉक मार्केट है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग। आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए यू कैन टेक एक्सपोजर टू यूरोपियन इक्विटीज एज वेल। ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, आप जो स्टॉक है इंडिविजुअल स्टॉक्स शो मोर वोलाटिलिटी। तो अगर इंडेक्स थोड़ा सीसॉ कर रहा है इंडिया या यूएस में, स्टॉक्स विल आल्सो शो जिगजैग वोलाटिलिटी शो करेगा स्टॉक्स। तो ये सिनारियो में अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो इंडेक्स क्या करता है, वोलेटिलिटी को कट डाउन करता है बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स। So, but you can remain bullish, whereas your volatility risk you are cutting down by increasing exposure to growing indices. तो इसके अलावा जो मैं चला जा रहा हूं और एक जगह पे, दैट इज इंडेक्स इंटरनेशनल 2 जो मैं बनाया हूं, लेट्स लुक एट दैट। यहाँ पे इंडेक्स इंटरनेशनल 2 में आई हैव बीन टॉकिंग कि चाइना इज अ कमबैक स्टोरी, हांगकांग इज अ कमबैक स्टोरी। हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट की बात किए थे एंड निके इज अ रिकॉर्ड हाई ब्रेकिंग, ये रिकॉर्ड निके में हाई ब्रेक होगा। ये मैं आज नहीं कई सारे मंथ्स में कह रहा था टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास में है कि ये चारों तरफ प्रिंट में आएगा कि निके ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई, एंड ये जो बुलिश मूड है मार्केट का इसमें और फ्यूल डालेगा। सो दिस इज ओवरऑल मार्केट मूड रिमेन्स बी बुलिश, बट कॉशन होने की रीजन है इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। तो जहां पे जिस सेगमेंट में वीकनेस दिख रहा है, लेट्स मेक इट अ बिट फ्रॉम द लास्ट वीक से, अगर इसको भी कंपेयर करेंगे लास्ट फ्राइडे से। सो यूरोपियन यूएस इक्विटीज आर डाउन अगर देखा जाए इन स्ट्रेंथ, अगर फ्राइडे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वेयर जो स्ट्रेंथ दिखा है चाइना एंड हांगकांग हैज बीन सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग जो बात किए थे अपना इन्वेस्टमेंट का एमएससीआई चाइना, जो आईएनडी मनी के जरिए अवेलेबल है, दिस चाइना एमएससीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अपना ट्रेड हैज रियली हैज बीन गोइंग प्रीटी वेल, वी आर doing well, and इसमें we discussed about this is the China का this is the chart a comeback story। मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा when we have a full green candle in the weekly chart which is not there। once we have the full green candle and then I will add alert कि short trend bullish, and then we can add further quantity to this China coming back story. So this China coming back is a positive inflation story. I don't know how it will play out. It is too early to say if it's a comeback China crisis bottom हो चुका है, it's very early to predict that। चाइना में अभी भी वीकनेस है, दिस लेटेस्ट रैली में थोड़ा दम लग रहा है, बस लेटेस्ट रैली थोड़ा रेगुलेटर सपोर्टेड भी है। सो वी नीड नॉट रेगुलेटेड सपोर्टेड रैली, बट इकोनॉमिकली फंडामेंटली चेंजिंग, फंडामेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है, उस बेसिस पे रैली वी वुड प्रेफर। बट चाइना इज स्ट्रॉन्ग, हमारे चाइना में एक्सपोजर इंक्रीज करना एंड यूरोप में एक्सपोजर इंक्रीज करना हैज बीन वेरी प्रॉफिटेबल। सो यूरोप एंड चाइना में मैं एक्सपोज ज्यादा रख रहा हूं, एंड यूएस एक्सपोजर से आई एम कटिंग डाउन
India exposure, I'm cutting down both the weakness दिख रहा है Nifty 500 and US structure में. So इसके अलावा we will look at a few MSCI index जिसका exchange traded fund available है. This is the global index, global ETF. We have shown that outright bullish नहीं है global total stock market in ETF है ये, तो it's not an outright bullish market. This is about 46% win probability. तो similarly fully outright नहीं, pockets of opportunity. तो country देखिए, sector देखिए, stock देखिए, तो it's about a story of country rotation, sector rotation, stock rotation, macro to micro level पे. और इसके साथ हम लोग और भी देखेंगे जो जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात किए थे कि इमर्जिंग मार्केट्स ETF जिसमें चाइना का एक्सपोजर है, इट इज कमिंग बैक. ये एक वीकली चार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ कमबैक स्टोरी. वंस द 1050-60 लेवल इज डन, दिस ETF कैन गो अप फर्दर. फिर इमर्जिंग मार्केट एशिया इज दिस इज द इंडेक्स सिमिलर, द कमबैक स्टोरी इन चाइना इज प्लेइंग अ रोल हियर. तो ये रहा हमारा इक्विटी का ओवरऑल आइडिया एक्सपोजर का. इसके साथ साथ हम लोग एक बार इंडिया के ऊपर ध्यान देंगे एंड विल टेक अ क्विक लुक एट जो ऑलरेडी इंडेक्स इंडिया and we will change, we'll compare from last Friday, 4 trading days ago ये strength meter को. So Nifty 500 is almost flat for the last, since last Friday. Outperformance मुझे दिख रहा है in the consumption sector, consumer durable sector, FMCG significant outperformance, whereas majority of mid cap, small cap, auto, infrastructure, commodity stocks significantly down performance. So consumer durable consumption, FMCG pretty risk aversion story. When the overall market is falling, but these segments are rising, that's sort of a risk away from growth to रियार्ड सेफ्टी की तरफ मूवमेंट. इसके सो नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट जो बाकी इंडेक्स देखने के लिए आई एम मूविंग टू इंडेक्स इंडिया 2 का जो टेम्पलेट मैं बना के रखा हूं. सो उसमें वंस अगेन आई विल मेक इट 4 ट्रेडिंग डेज एगो स्ट्रेंथ कंपैरिजन को. तो यहाँ पे दिख रहा है कि डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम फार्मा, सिग्निफिकेंट डाउन परफॉर्मेंस फ्रॉम आईटी, आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम मेटल, प्राइवेट बैंक, आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल्टी, डाउन फ्रॉम मीडिया, डाउन फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेगमेंट, डाउन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सो एक मिक्स मार्केट सिचुएशन, जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे रहिए, जहां पे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है डोंट स्टे इन देयर. टू मच फोकस मत कीजिए कि ब्रेकआउट स्टॉक्स पे अनलेस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. यहाँ पे RSI हैज टेकन सपोर्ट, वी मे सी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. ये जो लेवल है क्लाउड का टॉप, यहाँ पे एक बार अलर्ट डाल दीजिए क्रॉसिंग अप. Crossing up 69.93 level. So that will be a hint कि momentum is coming back, तब जाके breakout stocks में और मजा ले सकते हैं. But overall market का health नहीं है. That's why sector rotation to now country rotation more towards Europe and towards other Asian economies, especially China and Hong Kong comeback story. This will be the broad investment structure of mine. इसके अलावा I'm doing regular updates on the trading part, which is forex and commodity. तो आई होप ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प हो रहा है. अगर हेल्प हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.